Assalamu alaikum everybody, welcome back. Today it's episode 5 and I'm really excited for this. इस कॉन्वर्सेशन की सीरीज़ जिसमें हम लोग बैठते हैं और बात करते हैं, ट्राई करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जानना और होपफुली इट विल हेल्प आवर juniors as well. So today I have been joined by Kulsoom Zaman and Zeeshan Karim, who are my fellows here at AKU FS. Firstly, thank you so much for being here, both of you. Thanks for having us. And Kulsoom is the first lady guest in our podcast. इससे पहले सारे ही जो है मेल थे, so it's an honor for us and you as well, I hope. Yeah, it's so Kulsoom, starting with you, could you please tell us a bit about yourself कि अपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, प्राइमरी, और थोड़ा सा अगर टच करें अपने बारे में व्यूअर्स को. अच्छा, I started my primary education obviously in Gilgit Gojal. I was in Alamin Model School Gilgit. तो उधर ये है कि को एजुकेशन है और फिर काफ़ी मैं कहूँगी ओपन माहौल है गोजाल में, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है गोजाल के बारे में. सो आई एग्री टू दैट. हमारा जो है ना बहुत लर्निंग और बहुत ही एडवांस्ड इन्वायरमेंट होता था स्कूल में. तो उधर से जो है ना मेरी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई और फिर उधर के बाद में गई खान हायर सेकेंडरी स्कूल हुंजा. एंड दैट अगेन वो, क्योंकि हमें पता है कि AKDN की वजह से AKES की वजह से बहुत बेस्ट एजुकेशन मिलती है स्पेशली फॉर गर्ल्स इन हुंजा. तो मैं कहूँगी मैं प्रिविलेज्ड हूँ. आई वेंट टू अलमीन एंड देन आई वेंट टू खान हायर सेकेंडरी स्कूल हुंजा एंड देन मोर प्रिविलेज्ड कि मैं अभी खान यूनिवर्सिटी FS में हूँ. तो ये सब मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का. तो बस मेरे बैकग्राउंड ने मुझे लगता है कि जो मेरे क्वालिटीज़ है, जो स्किल्स है, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इधर आई हूँ, मुझे लगता है मेरे बैकग्राउंड का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली मेरे बैकग्राउंड मेरे एजुकेशन का. Zeeshan, same question for you. Like अगर briefly अगर आप अपनी एजुकेशनल जर्नी हमें बताएं व्यूअर्स को. Yeah, thank you, Kamran, for inviting me. So I guess आपने introduce नहीं करवाया. I should do that first. Yeah. This is Zeeshan और मेरा ताल्लुक हुंजा से है and I'm a student of FS. तो मेरी story थोड़ी बहुत different है compared to Kulsoom because I was a student of Azam before. So starting from my primary school, I'd say I was a student of a village DJ middle school Khudabad, and I guess Kulsoom ने काफ़ी कुछ discuss किया उस हवाले से कि यार being a student in one of the mountainous terrains of GB is not an easy task. But fortunately I was born in a good family, I'd say a secular family. कि उसके बाद जो मेरी grooming हो गई, then I went back to Khan Higher Secondary School Gilgit. फिर that was probably the most, I would say, the defining moment in my life because that changed me totally. And then after that I moved to HHS Karachi. That was again a sort of change in my educational journey, and it was again a good experience because I believe human being learns from whatever they go through. And then after that I went to Azam University. I was a medical aspirant, but unfortunately I couldn't win a spot, so I went back to Azam, and I was much more aspirant of social sciences after getting depressed by the medical colleges. Then Azam, I mean, I would say it was really a good experience and eye-opening experience because that actually opened a lot of doors for me, not from just the opportunities perspective, but from the the mental scopes as well. Then studying 2 years at Azam and then switching to FS, I guess probably people will think that this guy is crazy, but things happen. Yeah. Whatever is written in your fate, actually everyone has his own story. True. Yes, and then now I'm here at FS with you guys chilling and hanging out. That's it. Okay, so आज का जो कॉन्वर्सेशन है पिछले कॉन्वर्सेशन की तरह हमने कोई पहले बैठ के स्क्रिप्ट नहीं तैयार करी कि यार हम ये बोलेंगे. सो इट विल ऑल बी डायलॉग. जब आप करते हो, बैठ के बात करते हो, तो यू गेट न्यू पर्सपेक्टिव्स, आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. सो इट इज़ द सेम, इट्स अ स्टेज वेयर वी टॉक. तो जैसा कुलसूम शी स्टडीड एट AKES हुंजा, तो इनसे हम जानेंगे कि यार हाउ वाज लाइफ देयर. आई मीन स्कूलिंग सिस्टम, और आप प्रॉब्ली हॉस्टल पे में थी वहाँ पे. सो अगर आप अपनी जो 8th से 2nd ईयर तक की जर्नी बताएं कि हाउ वाज इट फॉर यू. ओके, सो AKES हुंजा मुझे लगता है कि मेरी भी लाइफ में सबसे टर्निंग और डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया 8th ग्रेड में, तो फिर ये एक हॉस्टल में आपको एक रूम में 9 बंदों के साथ बैठना होता है. मतलब ये बहुत अजीब सा, मतलब बहुत क्रेजी लगता है लोगों को अभी अगर बताते हैं तो कि 9 लोग के साथ कैसे बैठते हो. लेकिन उधर जो है ना 9 लोग के साथ बैठना, और वो भी डिफरेंट रीजन के होते थे. वो लोग मेक श्योर करते थे हम लोग हर लैंग्वेज उनके साथ बैठे हों. फिर स्कूल में जाओ तो उधर औरतों के लिए ग्रोथ के लिए एक बहुत परफेक्ट
इन्वायरमेंट होता था, क्योंकि ऑल गर्ल्स कॉलेज, ऑल गर्ल्स स्कूल है, तो जो एक वुमेन एम्पावरमेंट, एक फेमिनिज्म का जो अपने एलिमेंट आता है, एस्पेक्ट आता है, मुझे लगता है वो मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल में ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि जो होता था उधर एम्पावर वुमेन, एम्पावर गर्ल्स, और फिर हमें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी कि जो कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिफरेंट होता था। तो मेरे ग्रोथ में मेरे उस फेमिनिस्ट एलिमेंट जो मुझ में आया है, मुझे लगता है वो मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज से ज़्यादा आया है। और उसके अलावा उधर जैसे एफएस में है कि एकेडमिक्स भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, तो उधर भी जो है ना इस तरह एकेडमिक्स तो ऑब्वियसली फोकस होता था, लेकिन फिर स्पोर्ट्स और हर तरह के स्किल्स, बेसिकली उधर एक चीज़ को लेकर फोकस नहीं करते थे। अगर कोई पोइट्री में अच्छा है उनको मौका मिलता था, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है उनको मौका मिलता था। तो मुझे लगता है कि उधर का जो है ना हर किसी को मौका मिलता था अपने स्किल्स को लेके आगे जाना। तो मेरा उधर ज्वाइन करना, उधर डाइवर्स लोग के साथ 4-5 साल बैठना, हर साल 9 लोगों के साथ, फिर हम लोग सीनियर्स होते, हमारे जूनियर्स होते थे, बुली तो नहीं करते थे खैर, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे सीनियर्स थे। अच्छा, और बच्चों को गाइड करना, एक सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी आ जाती जब आप हॉस्टल में बैठते हो, जब किसी को घर की याद आए आप उनको संभालो, या तो कोई कभी वो आपको संभाले बहुत होता था। अपने दोस्तों के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होती है उधर, क्योंकि दुख दर्द सब आप शेयर करो, तो हॉस्टल में शाम की चाय लो और जाके बैठ के बातें करो, और ऐसी डीप बातें, और वो दोस्ती लाइफ टाइम के लिए रहती है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे दोस्त उधर के मेरे साथ इधर आए हैं, तो वो बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होती गई है। तो उधर जो कॉलेज टाइम की दोस्ती और जो मैच्योरिटी, फेमिनिज्म वगैरह था, ये मेरे साथ जो है ना अभी लाइफ टाइम के लिए, मतलब एक सॉर्ट ऑफ मेरे पर्सनैलिटी की पार्ट बन गई है। सो दैट्स माई स्टोरी ऑफ एकेसिस। एडिंग टू दैट क्वेश्चन, अभी जब यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी के हालात अलग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, किसी का कोई मेंटर होता है, कोई सीनियर होता है। तो how was it for you? How did you find FS and how did you the story? मुझे लगता है एफएस के प्रोग्राम के लिए सबसे फर्स्ट पैशनेट इंसान में ही थी, क्योंकि 9th ग्रेड में हमारे फिजिक्स के सर इधर आईडी में होते थे, सर राशिद, तो उन्होंने आके कहा था एक वाले कोई आर्ट्स एंड साइंसेस दोनों सब्जेक्ट वो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं 2019 यानी 18, क्योंकि 17, हाँ 2018 की बात है। तो मैं हमेशा, मुझे लगता है मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो दूसरी चीज़ मुझसे छूट रही है, तो इस वजह से मेडिकल और इंजीनियरिंग साथ करना और इस तरह की बहुत चीज़ें, और मुझे बहुत रिग्रेट हमेशा होता था। ह्यूमैनिटीज़, न्यूट्रिशन, इस तरह ऑप्शन आते थे ना एप्लीकेशन में कि ये सब्जेक्ट्स है, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता था मैं क्यों सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग चूज़ कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में पहले से था 9th ग्रेड से ही कि अच्छा नहीं, कोई एफएस मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज आने वाली है। फिर हुआ ये कि सेकंड ईयर जब हम लोग फाइनल पेपर दे थे, एंड में एक वालों ने कोई वो भेजा था, फॉर्म भेजा था, तो उसमें इनमें ऑप्शन था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो तब इवन दो एफएस का वो अनाउंस नहीं हुआ था, मैंने फिर भी AQU लिखा था, इवन दो मुझे मेडिकल का शौक नहीं था। फिर गेप ईयर आ गया और फिर हम लोगों ने इधर उधर अप्लाई किया, मैं वेट करी थी कब आएगा। गेप ईयर गुजर गया, फिर शुक्र से दिसंबर में आ गया। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि एफएस के बाद सबसे पहले मुझे पता था, क्योंकि मैं बहुत पहले से दिमाग में लेके बैठी थी, और लिबरल आर्ट्स वाज ऑलवेज माय थिंग। एफएस तक पहुंचने का मेरा यही सबसे पैशनेट इंसान। जबरदस्त हो गया। So Zeeshan, I want to know about your, क्योंकि कॉलेज का तो एज सच सेम ही होता है, तो यूनिवर्सिटी की जो लाइफ थी आपकी कायद आज़म में, सो हाउ वाज दैट? आई मीन आई एम नॉट हियर लाइक कंपेयरिंग इन अ बैड सेंस, बट थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो तो आपको चीज़ें, सिस्टम समझने को मौका मिलता है। सो हाउ वाज लाइफ एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंड हाउ व्हाट मेड यू चूज कि आप शिफ्ट करो, इफ यू वांट टू ऐड? Yeah, I guess you already mentioned that I cannot compare a public university with a private university. I mean, both are different entities, first and foremost. And if I delve into the the comparison part, I would say both are different. First thing is, Quaid Azam is much more politically active university. I would say the most politically active university in Pakistan. AKU, I would say, do not neutral. Support, or I mean, they usually stay neutral in sense of politics. And the experience was, again, I'd say, I mean, that was great. That was eye-opening because it taught me how to live in the world, how to actually hunt for opportunities, because most of the people actually think that Quaid Azam, being a government university, you find yourself in sort of chaos. I believe at some point you will feel like you find yourself in a chaos, but again, a blessing is blessing in disguise. That goes. Quaid Azam experience has been again really great, because the diversity factor in Quaid Azam is probably the best in the country, I'd say, because you find students from not just from Punjab, KPK, rural Sindh, urban Sindh, and Gilgit as well, Kashmir as well. So you get to stay along with the students from very different backgrounds, and the religious ethnicities, Christians, Hindus, and all the students come around there. So the experience was always great. And what actually persuaded me to choose for FS
initially FS was not on the cards for me because I was trying somewhere else. I was preparing for LUMS, not LUMS. I just filled a form, but ended up not appearing in the test of Gilgit. But I was applying for IBA, Habib. Unfortunately, I dropped out in the final procedure of both universities. So at that time, FS happened, and that was the last day of registrations. I guess April something, not April, but February something. Actually, I don't know the exact date. That was the last day. So my brother called me like, why you are not, applying for the program FS because IQ is offering it. I was somehow, roaming in between. Should I apply for it or should I not? But in the end, I decided it's okay. Just I have to waste 6,000 more because I wasted a lot of money before. So it's okay. Why shouldn't I waste 600 more, 6,000 more probably? Then I simply apply for FS, and I appeared in the test. I mean, it was quite easy. Then who knows? I was meant to be at FS, so then I'm here at FS. But the experience again, it's a totally different university. Private opportunities are much more here compared to what Quaid Azam has to offer. Quaid Azam is again, in the political sense, it is a much better university. Do you miss Quaid Azam? In some elements, I'd say. Because at some point, I feel like, Quaid Azam was better. Because if I don't find that sort of thing here, I feel like, did I make a mistake? No, but there should be no regrets in my life. किस चीज़ की ज़्यादा याद आती है? वो क्या मैं भी नहीं कह सकता. Same. So my next question would be from Kulsoom. You said कि liberal arts and humanities. So अगर GBC के गिलगित बल्तिस्तान चित्राल और रूरल एरियाज में देखें तो इतना शऊर नहीं है क्योंकि हम कन्वेंशनल फील्ड्स की तरफ ही ज़्यादा हैं. So आपको ये जो liberal arts और humanities का जो एक आइडिया कहाँ से आया और आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि आप प्री मेडिकल करो, प्री इंजीनियरिंग करो घर से, व्हाट वाज दैट स्टोरी? अच्छा, इसका ये है ना कि घर पे हमेशा बच्चों में एक होती है थोड़ी ज़िद्दी और थोड़ी बागी सी बच्ची होती है, तो मैं वो वाली बच्ची हूँ. तो लिबरल आर्ट्स का आइडिया मुझे याद था, ओबियसली मेरे अम्मी की तरफ से था. उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों में से कोई मेडिकल करे, तो मैंने पहले से बचपन से वो किया हुआ था कि मैं तो नहीं करने वाली, मुझसे एक्सपेक्टेशन हटा दें. फिर उस पर अभी भी कभी कभार ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं. फिर ये हुआ था कि मैंने बचपन से बहुत एक्टिव रीडर थी. मैं 5th-6 से बहुत ज़्यादा रीडिंग करती थी, नॉवेल्स और इस तरह की. तो फिर तब मैंने एक बुक पढ़ी थी, अब मुझे नाम भी याद नहीं है. मैं लाइब्रेरी से चुरा के लाती थी बुक सारे में. हाँ, बहुत उधर इशू नहीं करने देते थे ना, हम लोग बहुत छोटे होते थे. तो तब मैंने पढ़ी थी, कोई मतलब एक आदमी था, उसके साथ मेरी लाइफ स्टोरी बहुत रेजोनेट करी थी. वो भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, वो थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप का था, इस तरह की. वो बुक मैं 2-3 बार पढ़ी थी. तो उसमें अभी बच्ची थी, इतना मुझे वो नहीं याद. एज में थी तब तू पढ़ी? 6th में कौन से एज के होते हैं? 10-12 साल की. 12 साल के. हाँ, 12 साल के. सही. तो फिर मैं वो बुक बहुत बार पढ़ी, और उस बुक में से यूनिवर्सिटी और उसका नाम मुझे याद नहीं है, बस वो लाइब्रेरी से बुक्स चुराता था, वो मुझे याद है. और फिर लिबरल आर्ट्स का नाम याद है क्योंकि वो बाद में लिबरल आर्ट्स में गया था, और फिर इस तरह कुछ. फिर बाद में सीख स्टोरी मुझे प्रॉपर याद नहीं है. तो तब और फिर बाद में जाके मैंने कोई लिबरल आर्ट्स के रिलेटेड कोई मूवी देखी थी, तब भी शायद उसी बुक की कोई मूवी थी, वो देखी. लिबरल आर्ट्स मूवी भी एक है वैसे. हाँ, इस तरह की कोई मूवी है. फिर इस तरह के बस मुझे ये एहसास होता है कि वही बात की मतलब एक चीज़ को लो तो दूसरी चीज़ छूट जाती है. एंड आई थॉट कि लिबरल आर्ट्स वाज मोर अबाउट स्किल डेवलपमेंट. आई थिंक यू आर नॉट लेटिंग वन थिंग जस्ट इन द कॉर्नर इन द बॉक्स, लाइक यू आर गोइंग टू द मेडिकल, यू हैव ऑल द स्किल्स ऑफ द डॉक्टर ऑफ something. Then what about your tech skills, what about your communication skills, everything. I think दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंसान को हर तरह की स्किल चाहिए, सर्वाइवल स्किल, सब कुछ. तो फिर तब से ही मेरे दिमाग में एक बेसिक आइडिया हो गया था कि उस आदमी की स्टोरी से क्या छाने लिबरल आर्ट्स है जो कि इस तरह दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाना, जीना जिस तरह आप जीना चाहते हो. तो तब से ही इनटू लिबरल आर्ट्स थी मैं. तो फिर जब घर वालों ने 9th के टाइम पे इशू नहीं था, साइंस लिया, खुश हो गए. मैट्रिक के बाद मैंने मैथ्स और बायो लिया, ठीक था. फिर ग्रेजुएशन हो गई, रिश्तेदार आ गए घर पे, बच्ची डॉक्टर बनेगा, हाँ, पूछना स्टार्ट. फिर मैंने अम्मी को कहा मैं नहीं कर रही हूँ. फिर रिश्तेदार को ताने सुनने को मिले, इस तरह ये वो, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुंजा हायर सेकेंडरी गई हो, कैसे डॉक्टर नहीं बन सकती. मैंने कहा ऐसे नहीं बनी मैं, और फिर मैं इधर हूँ आज, और सब खुश है माशाल्लाह से कि मैं इधर आई हूँ. तो यार ये चीज़ मैंने देखी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम जीबीसी ये रेजोनेट करती है स्टोरी हर किसी की. क्वाइट सेम ही होता है सबका वैसे कि you have that pressure, but so how do you address the same question कि आपके लिए liberal arts क्या है, और एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसको परस्यू क्यों करे बंदा, what is
it to you? Yeah, I would say कि liberal arts is a world in itself, because as Kulsoom already said that कि when you pursue medical, you just remain stick to medical. When you pursue engineering, you just become an engineer. You don't have those skills which she mentioned, like you need life skills, you need communication skills, and you need much more than just that doctor and engineer, because salary, I would say, is not going to be everything for you in the life, because you need much more than that. So liberal arts in that sense is just about discovering the world as more as you can, simply, if I have to just phrase it in one sentence, because liberal arts is not just a limited world, it's unlimited. The more you want to pursue, the more you want to explore, you can do that. But having said that, it's not the same in medical, it's not the same in engineering, because after some point, after at some stage, you have to accept that you are okay with what you have done or what you have achieved so far. But liberal arts actually offers, I would say, plenty of opportunities. बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है, and exploration is, I would say, it's very, very, very far. As compared to the conventional fields, liberal arts, for me, I would say कि इन 4 सालों में आपको और चीज़ें फाइंड आउट करने का टाइम मिलता है. इट्स नॉट समथिंग कि आप पर्टिकुलर फील्ड या ये पोस्ट आपके लिए है, आप वहाँ बनोगे, वो ऐसा नहीं है. सो मेरा मैं वाई डिड आई चूज एफएस, तो जो बचपन में हम स्टेप क्लास अटेंड करते थे 8th 9th में, दे रियली काइंड ऑफ मेरे अंदर वो आग लगा दी, क्योंकि मुझे हमेशा से हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, रीडिंग करना और इस तरह की डायलॉग्स करना, लोगों से जानना कि हम क्यों हैं. तो ये जब मैंने देखा तो मतलब मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था जो कन्वेंशनल फील्ड्स है. बट यहाँ आके आई गेट टू एक्सप्लोर courses like Silk Roads and literature and whatnot. CPA as well. Comparative political analysis. So I'm not saying कि मेरा एक लाइफ का गोल मतलब मैं अचीव कर लिया, but the thing is जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हो गई. That is for sure. I am happy. And the fact कि despite us not having a background in politics और वो सब, इधर मतलब जो टीचर्स है और जो environment है, accepting, nurturing, बेशक डांटते हैं कभी कभार वो करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे नर्सिंग के लिए. अभी डीन को देखो, इतने सपोर्टिव है हर मामले में. आप चाहे जो बार डिस्कस करना चाहे डीन के साथ कर सकते हो. इतना ओपन एनवायरनमेंट शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में हो. And I think we are warriors, bro. Like yes, zero background से आके we are fighting here, living in hostels. So we should appreciate ourselves. And the city it's is very difficult to survive in a city where you have never been before. Yes. And this is the case with most of the students from north, from Chitral, because most of them have spent their times in those mountainous terrains, and coming here, competing with students from Karachi and then surviving here, that's the best thing, I guess, we can take. और इतने फ्री वाले इन्वायरमेंट से आना जहाँ आप अपने लिए मर्जी से रात को बाहर जा सकते हो. इधर अपने जान के लाले पड़ते हैं, इधर बाहर जाने से पहले बैग संभालो, फ़ोन संभालो. स्टार्टिंग में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट एट सम पॉइंट यू कम टू इन टर्म्स विद द एरिया दैट यू आर लिविंग, दैट it's a necessity of life. You have to survive this way. True. Even you never know कि कराची जैसे शहर में पता नहीं कोई आपके कपड़े भी उतार देते हैं. सीरियस बात है. मोबाइल तो दूर की बात है, मोबाइल इज द प्रेशियस थिंग. They don't care about you. टीचर तो गए हमारे. अच्छा, तो आई मीन चलो एफएस में पढ़ रहा है ज़ीशान, आपसे भी अगला क्वेश्चन वही है कि where are like you seeing yourself after 4 years, 4 साल बाद ये डिग्री लेके आप कहाँ देखते हो? कोई मास्टर्स करना है, नहीं कुछ और, like how is your mind में क्या चल रहा है आजकल? यार मैंने कल के लिए अपने आप को देखा नहीं है, तो 4 साल की बात कर रहे हैं. जनरली अगर आउटलाइन मेजर वगैरह का, I would say कि I'm much more into entrepreneurship, so probably doing masters is always on the card. कोई भी स्टूडेंट हो, पाकिस्तान से अंडरग्रेड आप करते हो, then pursuing master's degree is always going to be there. And after that, even with my colleagues, I used to discuss ki where do you see yourself after graduating from FS or after pursuing masters. तो बहुत सारे कह रहे होते कि नहीं यार, I want to go to US, I want to go to Germany, France, Spain and blah blah blah, but I still believe Pakistan needs us, particularly GB needs us. So I'm that kind of guy कि थोड़ा nationalist भी आप कह सकते हो मुझे. Comrade again, that typical word. कि मैं तो I'm going to be in the GB, seriously, because I have made that promise with myself. Because GB needs us. अगर आप GB की हालत देखेंगे ना थोड़ी बहुत, you feel like कि नहीं यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का issue and we are the ones who are going to solve it. Inaugural जब बैच हमें वेलकम कर रहे थे तो डीन ने एक बात कही थी कि Pakistan's problems are not going to be solved by people coming from outside.
because this FS is going to solve them, and we are the ones who are going to solve them. And as I said earlier कि मैं थोड़ा I am much more into entrepreneurial mindset, so probably inshallah तो मैं अब disclose नहीं करूँगा कि what I am going to do, लेकिन you will see me hopefully pursuing what I have dreamt of. Are you a comrade as well or something else is going on? Maybe comrade. बस मेरा ये है कि अभी 2 सालों तक तो हमारे इलेक्टिव्स चल रहे हैं, मेरा बस यही है कि स्किल्स डेवलपमेंट जितना मैं डेवलप कर सकती हूँ. फिर टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेरा ज़्यादा मतलब वो है इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है. थोड़ा सा बताएंगी. क्वांटिटेटिव रिसर्च वही बात की जब आप कंक्रीट डेटा फाइंड करते हो. अब अगर मैं लेट्स से मैं क्लाइमेट चेंज परस्यू करती हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं है, मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ, मैं सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ. तो 2 साल बाद अगर फॉर इंस्टेंस में गई क्लाइमेट चेंज में, ऑब्वियसली मैं वापस गिलगित बल्तिस्तान जाऊँगी, उधर डेटा प्रॉपर जमा करूँगी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करूँगी जो इस चीज़ को एड्रेस करें. तो मेरे भी जो है ड्रीम्स हर तरह के 360 डिग्री में घूमते. एक रात मुझे डिप्लोमेट बनना होता है, दूसरे रात में क्लाइमेट चेंज, लिबरल आर्ट्स इस तरह. फिर मैं देखूंगी स्किल्स डेवलप करूंगी, फिर जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगे इसमें उसमें जाऊंगी. और मेरा भी वहीं से मुझे नहीं लगता मैं कभी गिलगित बल्तिस्तान छोड़ के कहीं जाऊंगी. मुझे लगता है कि एंड में जाके उधर हमने काम करना है, उधर ही वो करना है. दैट्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैव बीन पुट onto us, even in a case as Hunza, like you are the cream of Gilgit Baltistan, you are responsible for it, you know. तो वो चीज़ रह गई है अंदर, तो जाके उधर obviously काम करना है. Yeah, and it is very difficult to just abandon your birthplace. कुछ लोगों को लगता है कि इतना आसान है कि आप यहाँ से चले जाएं पाकिस्तान छोड़ के, move abroad, settle abroad and just live the life you want to. But ऐसा इतना आसान भी नहीं है कि आप अपने उस जगह को छोड़ रहे हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की सारी मेमोरीज रही हैं. So at some point in life, I guess you will regret कि यार नहीं मुझे उधर ही बैठना चाहिए था. और चेंज ऐसी थोड़ी आता है. हाँ, again देखो कि I guess it's getting much more lengthier, but I'd say कि एक example हम usually लेते हैं कि China is successful because one of its generation has sacrificed their life. China not used to be in the stage it is now. क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मसाइल थे उनके साथ. एट वन पॉइंट कि उन्होंने क्या किया कि यार एक हमारी पूरी जनरेशन क्या करेगी, सेक्रीफाइस करेगी फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रंस, फॉर द सेक ऑफ द कमिंग जनरेशंस. देन आई गेस द सेम गोज फॉर पाकिस्तान बिकॉज आज हम नहीं करेंगे तो हु इज़ गोइंग टू डू इट फॉर अस. लोग कहते हैं कि यार वी विल मूव अब्रॉड. ओके, यू विल मूव अब्रॉड बिकॉज यू हैव मनी, लेकिन आई मीन हैव यू थिंक अबाउट दोज हु डू नॉट हैव मनी, जो कि इधर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे. एंड again his highness's farman comes in कि यार it's not about कि what you have achieved, it's about कि what you have helped others in achieving, कि आप दूसरों को कितना मदद करते हैं कि वो कुछ अचीव कर रहे हैं. so that goes the same way कि I guess we should focus on कि हम खुद कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं. और ये सेक्रीफाइस वाली बात मैं बहुत एक टाइम तक मतलब अनफेयर फील करती थी कि मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ अपने आगे जनरेशन के लिए. इट इज़ सम टाइम आई स्टिल पॉन्डर ऑन इट, मतलब मैं क्यों करूँ ना, क्यों मेरे लिए किसी ने नहीं किया. फिर इधर आने के बाद एहसास हुआ कि नहीं सिर्फ मैं इस जद्दोजहद में नहीं हूँ और भी लोग हैं. सो इट्स अश्योरिंग कि नहीं आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कुछ लोगों ने इन्फेक्ट किया हुआ भी है. बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ, अपने इंटरेस्ट, अपने सब कुछ ड्रीम्स वगैरह. तो इट्स मोर इनकरेजिंग कि नहीं आप भी करो, आप अपने अगले जनरेशन के लिए करो. मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी अगर कल हुई, हाँ, तो फिर वो जो ना सेफ फील करेगी गिलगित बल्तिस्तान, वो उस इन चीज़ों को एड्रेस करे और वो करे, मतलब इवन इन पाकिस्तान वो सेफ फील करे. सो इट्स मोर अबाउट गोइंग बैक एंड गिविंग. नाइस यार, गिविंग द बेस्ट यू हैव सिंपली इज दैट. मैं तो लाइक अभी थोड़े से और करने हैं एपिसोड्स, थोड़े और लोगों से मिलना है, then you will decide to मैं क्या करने वाला हूँ. थोड़ा सा काबिल बनाना है खुद को, उस काबिल फिर काम करना है, क्योंकि खाली गिलास किसी की प्यास नहीं बुझाता. मैंने कहीं पढ़ा था. So guys, this conversation I literally मतलब truly मैंने बहुत enjoy किया. Thank you so much for your time.